Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic, and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444 2371 7106, and our third dedicated line is 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, you need to prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and to discuss the stories and to respond to listeners' questions, we are joined in the studio by market expert Sharad Kohli. Sharad ji, a warm welcome to the program. Thank you so much, Ranga. Bahut bahut dhanyavad, and a big hello to all the listeners of Akashvani. Well, let's begin with the headlines. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal says India should target to increase the value of spices exports to $10 billion annually. On the Wall Street, the Dow slides 0.8% on mixed economic data, and Brent crude oil futures post the third consecutive weekly gain. And now for all the details, let's start our program with the spices story. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal today said that India should target to increase the value of spices exports to $10 billion annually by 2023, which currently stands at $4 billion. The Union Minister proposed to organize the world's largest spice exhibition, conference and symposium of the spice industry next year in New Delhi and invite global players for it. He was addressing the Spices Export Excellence Awards function in Navi Mumbai today. While lauding Indian players in the spice industry, he said that India is second to none and the spice industry has immense potential. Mr. Goyal said that more than 3.5 crore Indians live in different countries. He said that they not only are the consumers of Indian spices but also their brand ambassadors. Mr. Goyal presented the Spices Excellence Export Awards on this occasion. The 14th World Spice Congress commenced in Navi Mumbai yesterday. The first day of the event commenced with the inauguration of the exhibition, highlighting the variety of spices and value-added spice products as well as innovative technologies and solutions in the spices industry, and a visual presentation on the Indian spice sector by Mr. D. Satyan, Secretary of the Spices Board. The theme for this Congress is Vision 2030, Sustainability, Productivity, Innovation, Collaboration, Excellence and Safety. And let's start taking phone calls as usual, and joining us first this evening is Vikas from Kolkata. Good evening, Vikas, and welcome to Market Mantra. I believe there is some problem in the telephone line. We'll try and connect to Vikas during the course of today's program. But Sharadji, to talk about spices, indeed, you know, it spices up our life and also the business. And there we have a specific board, the Spices Board of India, which targets the world consumers as far as exports are concerned. So from $4 billion annually from now to take it to $10 billion in the next 7 years by 2030. What do you think? How achievable or difficult is that target? Well, I think first of all, Ranga, I would say it's a very spicy news in a nicer way, I should say. Yeah. And I think India has got tremendous potential in spices, and Indian spices in particular, Ranga.
are popular across the world. If you have foreigners coming to India or Indian food being made abroad, I think spices are the winners because whatever recipe you may have, I think it is the spices which matter. So also we should not forget from the farmer's perspective. I think spices are a very, very profitable business. Some of the spices are really expensive and they are very rare. They need special climatic conditions to grow, special soil, special cultivation in terms of situation. So I think a tremendous potential, and this target set by government of $7 billion seems to be very, very realistic as of now, because when I travel abroad, I find a lot of foreigners, a lot of countries evincing interest in Indian spices. Yes. When you say Indian food, obviously by default you mean Indian spices as well. That's true. So I think it's going to be very spicy going forward, undoubtedly, Ranga. Right, and let's take phone calls now. We have Munna joining us from Delhi. Good evening, Munna, and welcome to Market Mantra. सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सरवण गोल्ड बॉन्ड है सरकारी, जो मेरे ख्याल में 10 साल के लिए इन्वेस्ट होता है जी, तो इसमें हम किस प्रकार इन्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब हमारा पैसा तो सरकार खाते में होता है। जी जी, शरद जी, ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है मुन्ना जी का दिल्ली से, और मैं इनका नाम सुन के मुझे याद आया बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरा भी नाम मुझे पेट नेम मुन्ना से बुलाया जाता था। वंडरफुल। तो आपका नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुन्ना जी देखिए, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स जब आप लेते हैं तो आपके बैंक में जो अकाउंट होता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ आप एक डीमैट अकाउंट खुलता है, क्योंकि ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स डीमैट फॉर्म में रहते हैं। पहले शुरू में ये पेपर फॉर्म में आए थे, पर अब ये डीमैट फॉर्म में रहते हैं। तो आप इसलिए वहाँ पर उन बैंक को बोलिए, वो आपका एक डीमैट अकाउंट खुलाएंगे और जितने भी आपने बॉन्ड में निवेश करना है, आपके अकाउंट से उस डीमैट अकाउंट में उतने बॉन्ड वो खरीद के और आपके अकाउंट में वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब जितना भी आप निवेश करना चाहते हैं आप उनको बताइए और उतना ही अमाउंट बैंक उसमें से डेबिट कर देगा, और डेबिट करके वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपके लिए ले लेंगे और आपके डीमैट अकाउंट में वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो जो है आपके अकाउंट में पड़ा होगा, और डीमैट अकाउंट उसको आप कभी भी देख सकते हैं। ऐसे ही जब बेचना हो, 8 साल इसकी मैच्योरिटी होती है, जब भी आप बेचना चाहें तो आप इसको 5 साल बाद तो बेच सकते हैं। आपको शायद ये भी जानकारी दे दूं कि इस पर कैपिटल गेन नहीं लगता है। अगर आप 5 साल बाद बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसमें 2.5% ब्याज भी मिलता है, वो ब्याज हालांकि टैक्सेबल है। बिल्कुल करिए, ये तो बहुत अच्छा गोल्ड में निवेश करने का तरीका है, और मैं समझता हूँ कि जो सोने में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि कहाँ वो सिक्के और कॉइन्स और बार्स खरीदना, उनको संभालना, लॉकर में रखना, यहाँ रखना, सेफ्टी भी नहीं होती है। तो इसलिए बिल्कुल लीजिए मुन्ना जी, जब आप ले लीजिएगा तो हमें बताइएगा आपने कितने के खरीदे और आपको खरीदने में कितनी आसानी रही। हमें खुशी होगी सुन के कि हमारी दी हुई जानकारी आपको लाभदायक साबित हुई। Okay, let's go across to Kolkata where we have Vikas joining us. Good evening, Vikas, and welcome to Market Mantra. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Yeah, नमस्ते मार्केट मंत्रा, सभी को मेरा नमस्कार। 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 अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, फॉरेन शेयर मार्केट और इंडियन शेयर मार्केट में कोई रिलेशन है? और इंटरेस्ट रेट अगर घट गया तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को कितना बेनिफिट मिलेगा? अच्छा, चलिए। Yes. आपने पहले पूछा फॉरेन शेयर मार्केट्स में और इंडियन शेयर मार्केट्स में। देखिए, दूर की रिश्तेदारी तो है, बिल्कुल सगे भाई बहन तो नहीं है, भाई भाई नहीं है, पर दूर की रिश्तेदारी में इसलिए बोलता हूँ विकास, क्योंकि हमारी जब मार्केट सुबह खुलती हैं, और अगर आप कभी सुबह सुबह स्टॉक मार्केट्स को ट्रैक करें ऑनलाइन या जिस भी माध्यम से आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो क्यूज़ जो होते हैं, क्यूज़ हम कहते हैं, जो संकेत लेती है वो विकास फॉरेन शेयर मार्केट से लेती है। क्योंकि खासकर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका और हमारे का यहाँ पर टाइम डिफरेंस काफ़ी है। अमेरिका के कुछ हिस्से हैं जहाँ 12-13 घंटे का फ़र्क है, तो जब वहाँ की मार्केट्स बंद हो जाती हैं, हमारा खुलने का टाइम होता है, तो लाजमी बात है वहाँ से क्यूज़ लेती है। और आजकल तो पूरा विश्व विकास एक परिवार की तरह है। कहीं भी कुछ भी होता है, पहले होता था कि वहाँ कुछ होता है तो होता रहे। एक पुराना गाना है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूँ, बहुत पुराना एक गाना है। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब कहीं ग्लोबल विलेज, बिल्कुल इट्स अ ग्लोबल विलेज, और कहीं भी कुछ भी होता है उसका असर भारत में होता है। तो इस लिहाज से मैं बल्कि एक कहावत है रंगा शेयर मार्केट में
कि अमेरिका छींक मारता है, जुकाम दुनिया को लग जाता है। तो इसलिए दूर की रिश्तेदारी विकास मैं ज़रूर कहूँगा। इन्होंने एक सवाल और पूछा था कि but now let's move on and take our next caller. We have SPS Jain, one of our regular callers on the show from Greater Noida. Good evening, Mr. Jain, and welcome to the program. गुड इवनिंग शरद जी। गुड इवनिंग जैन साहब। मैं मुन्ना कह के बोलूंगा, मेरी उम्र जी बिल्कुल, आप बड़े शौक से बोल सकते हैं। सिर्फ ये है कि कहीं आकाशवाणी कंफ्यूज ना हो जाए कि कोई और पैनलिस्ट बैठ गया। अच्छा, ये मैं किसी खास कंपनी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन अभी एप्पल के मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ है जी। लेकिन बात ये हो रही है कि उसका प्राइस इंडिया में सस्ता होना चाहिए था जी। वो बता रहे हैं कि कुछ मॉडल तो अमेरिका में 50% चीपर हैं जी, दुबई में चीपर हैं जी। तो इसका जो फायदा होना चाहिए था आम आदमी को जी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से, जी। तो वो कब तक मिलेगा? क्योंकि हो सकता है शुरू में कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रही हो जी, और जब बाद में क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो ये, लेकिन इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए जैन साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं, आप सारा अर्थशास्त्र भी मुझे पूरी विश्वास है आप समझते हैं। जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि देखिए जब इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो ऐसा नहीं होता कि इंडिया का सीधा इंडिया में आए। उसमें मैन्युफैक्चरिंग के बाद सॉफ्टवेयर लोड होता है और उसका जो एप्पल का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ से वो सारा फ़ोन को तैयार करते हैं कस्टमर को देने के लिए, वो प्रोसेस फिर भी बाकी रहता है। तो उसके लिए जब वापस इंडिया में आता है तो उसमें कस्टम ड्यूटीज़ तो फिर भी लगेंगी। पर आपने जो बाद में बात कही वो बहुत, दुबई में कस्टम ड्यूटी कम है, 4% के करीब लगती है, अमेरिका में क्योंकि लोकल वहीं का है। तो आपने जो बाद में बात कही बहुत पते की बात करी। जैसे जैसे इसका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और जैसे जैसे ये एप्पल भी इस बात को रियलाइज़ करेगी कि भारत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। भारत बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है इस समय एप्पल के डिवाइसेस का। अब पहले वाली बात नहीं है कि कोई खरीदता था, अब हर व्यक्ति चाहता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद इसकी बिल्कुल, और कल एक अनाउंसमेंट भी आई, जैन साहब मैं आपकी जानकारी कर देता हूँ कि एप्पल ऑलरेडी कंसिडर कर रहा है यहाँ पर कुछ प्राइसेस को कट करने का, जिससे कि वो जो कस्टम ड्यूटी का एडजस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट इतना ना पड़े। तो जैन साहब खबर अच्छी है और आपको तो जानकारी है और आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब भी दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well, let's move on and take our next caller. We have Yogesh joining us from Delhi. Good evening, Yogesh, and welcome to the program. नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया काम करने के लिए। जी सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके एडवाइस पे मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था जी। 40 का सेम भाव था। उसके तुरंत बाद युद्ध स्टार्ट हो गया यूक्रेन रशिया का और मेरा भाव 60,000 तक पहुँच गया था। अरे वाह। और सर मेरा सवाल ये है कि इंडियन शेयर मार्केट के अलावा अक्सर लोगों को निवेश करने के लिए सलाह दी जाती है नेस्डैक में और बाहर के कंट्रीज में जी। तो क्या हमारी कंट्रीज कैपेबल इनफ नहीं है कि वो रिटर्न निकाल के दे, या वहाँ पे औसतन रिटर्न कुछ ज्यादा रहता है? वेल पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, आपको हमें खुशी है इस बात की कि आपको गोल्ड बॉन्ड में फ़ायदा हुआ। रंगा ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं अगर मार्केट मंत्रा में बताया गया किसी टिप से बहुत मुनाफा हो तो कोई पार्टी वार्टी श्रोताओं की तरफ से हमें दी जाए, प्रॉफिट शेयरिंग, कोई लड्डू वड्डू हमारे लिए भेजा जाए। चलिए ये तो रही मजाक की बात। ऐसा नहीं है योगेश कि फॉरेन मार्केट्स में ही मुनाफा होता है। ये सलाह उन लोगों को दी जाती है योगेश कि आप फॉरेन मार्केट्स में, नेस्डैक में या डाउ जोन्स में आप इन्वेस्ट करें जब आप, जो लोग उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी वैरायटी चाहते हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, उनको सलाह दी जाती है। भारतीय मार्केट तो योगेश बहुत बल्ले बल्ले के रिटर्न दे रहे हैं, 12-13% कॉन्स्टेंट रिटर्न योगेश इसमें पिछले चंद सालों में आया है। एवरेज हम देखें उतार चढ़ाव के बावजूद, हो सकता है कि कुछ अमेरिका के इंडाइसेस उतना रिटर्न ना भी दे पाई हो। तो ये इसलिए नहीं दिया जाता कि भारत की मार्केट कम परफॉर्म करिए, बल्कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो FPIs और FIIs जिनको हम बोलते हैं, उनका तो भारत की तरफ थोड़े थोड़े दिनों बाद रुख हो जाता है। तो अगर भारतीय मार्केट लुभावनी ना हो तो फिर वो भारत की तरफ क्यों देखें? वो तो खाली नेस्डैक और डाउ जोन्स और S&P में देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए होता है जो लोग डाइवर्सिटी। अब जैसे मान लीजिए आप अगर पुराने प्लेयर हैं और आप इसको कर के निफ्टी में, बैंक निफ्टी में करके कभी कभी थोड़ी बोरियत भी हो जाती है, कुछ नया ट्राई किया जाए, तो उसमें लोग वहाँ जाके, आजकल बहुत सरल हो गया, ऑनलाइन प्रोसेस है, डीमैट अकाउंट आप वहीं बैठे बैठे खुलवा सकते हैं। पैसे भेजने की प्रक्रिया भी आसान है, LRS के ज़रिए आप पैसा भेज सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। $2.5 लाख प्रति भारतीय प्रति वर्ष निवेश कर सकता है। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन है। मुझे लगता है उसको सीख के ये लगता है कि हमने दुनिया जीत ली, हम तो भारत में करते हैं, हम अब अमेरिका में भी इन्वेस्ट करते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी करते हैं। तो इस वजह से है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी
नहीं है योगेश कि भारतीय मार्केट से रिटर्न कम आ रहा है जी। Right. Let's now go across to Thane, where we have Gurunath joining us on the program. One of our regular callers. Good evening and welcome to Market Mantra. सर नमस्कार। Namaskar. गुरुनाथ जी। सर सोनी सर को नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मुझे जो सेबी के बारे में पूछना था सर, इन्होंने जो अभी एक इनिशिएटिव लिया है जी जो पहले मतलब जो ट्रेड प्लस 2 सेटलमेंट का जो उसके बाद ट्रेड प्लस 1 आवर जो उन्होंने बात की है, जी। 1 आवर ट्रेड प्लस जो सेटलमेंट की बात की है जी। ये तो हम शेयर खरीदते या बेचते हैं, जो शेयर डिमेट में आने में जो देरी होती थी जी सर, इसका मतलब ये जो इन्वेस्टर को कितना फायदा होगा, और ये जो स्कीम है सर, ये जो मतलब ये सभी शेयरों के लिए अवेलेबल है। थैंक यू जी गुरुनाथ जी, बहुत अच्छी खबर है जिसका आपने जिक्र किया और धन्यवाद आपका ये रिमाइंड कराने को। मैं चाह रहा था इसको डिस्कस करना, आपने उसको याद करा दिया। जी हाँ, T+2 कहाँ एक ज़माने में 15 दिन, फिर उसके बाद 1 हफ्ता, फिर T+3, अब T+2, T+1 और अब तो 2 घंटे में सेटलमेंट की बात की जा रही है। मुझे लग रहा है बहुत ही स्वागत करने योग्य कदम है और ये बताता है कि भारत की जो फिनटेक इंडस्ट्री है, जो पूरा पेमेंट सिस्टम है हमारा, जिसके मैकेनिज्म से आज देखिए आप पलक झपकते ही पेमेंट कहीं से कहीं पहुंच जाती है, 1 सेकंड में कोई भी बैंक में अकाउंट हो, किसी भी प्रकार का अकाउंट हो। तो मुझे लग रहा है वही फिनटेक का लाभ अब शेयर मार्केट में भी आता हुआ दिख रहा है। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा यहाँ स्टॉक एक्सचेंजेस की, पहले तो सेबी की, और स्टॉक एक्सचेंजेस की जिन्होंने अपने IT हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में ये बदलाव किए हैं जिससे कि ये सहूलियत लोगों को मिल पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि T+2 और उसके बाद T+2 आवर्स, ये बहुत बढ़िया है। इससे तो मार्केट में क्या होगा, इससे गुरुनाथ जी मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपका पैसा मान लीजिए आप 3 दिन बाद आ रहा है, तो उसी पैसे को अगर आप चर्न करना चाहते हैं, अंग्रेजी में शब्द होता है चर्न, तो वो आपको 3 दिन वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मात्र 2 घंटे के अंदर, मतलब मार्केट जब खुली है, मैं समझता हूँ 3 बार आप उस पैसे को घुमा सकते हैं। अगर मैं मार्केट के 6 घंटे लेके चलूँ तो बहुत स्वागत करने योग्य कदम है। मुझे लग रहा है इससे निवेशकों को बहुत आसानी होने वाली है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट का टर्नओवर भी गुरुनाथ जी बढ़ते हुए आप देखेंगे। Right. Let's go across to Kerala, where we have Naveen joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra. Hello. Naveen, do we have you online? I think we have lost contact. Well, never mind, happens in a live program like this. We have a number of other callers also waiting on the line. Let's take Varun, who is joining us from Gurugram in Haryana. Good evening, Varun, and welcome to Market Mantra. A very good evening to Market Mantra team. Yeah. I have my first question is that we know that the number 1 economy in the world, US, is thinking about doing a rate cut. Mm-hmm. The number 2 economy, China, is doing the opposite. Mm-hmm. So, firstly, how is this going to pan out? That is my first question. Mm-hmm. My other question is, in FII, we hear on a daily basis that FIIs have put money in Indian market, mm-hmm. and suddenly we next day say they have found some other markets and then they move to other markets. Mm-hmm. So my question is, how short is their investment horizon? Do they do it on daily basis, or what are these parameters? Okay. Fine, Varun. Your first question, Varun, is regarding the US rate cut. First of all, I really don't think, Varun, that in the forthcoming Fed meeting, which is on the 19th and 20th of September, we are really going to see rate cut, because the inflation numbers from the US are still beyond the tolerable limit of Fed. So first of all, rate cut is not happening. We saw ECB raising the rates a couple of days ago. So therefore, rate cut is not coming. So I just need to correct your information that the feedback you have, it is not correct. And China is cutting down the rates because Chinese economy, Varun, is not doing very well. The real estate sector, the financial sector, the technology sector, they have been affected by massive climate change. They've been rains, floods. And I think overall, China's traditional growth, which we've seen over 3 decades, that's true. It's not the same anymore. So for them, the growth is priority rather than inflation. Exactly. So they're trying to cut down the rates, Varun. Right now, they are not focusing. In fact, in China, we heard of deflation as well.
So when there is deflation, the central banks of countries, they cut down the rates, which is why. So we're seeing two opposite things, but they are, two different parts of the world, but we are more affected, in terms of stock markets. We are more affected by the US and the European stock markets, although Chinese stock markets also play the role. Your second question was regarding the FIIs. Yeah. I think FIIs, Varun, they come from different parts of the world. There are FIIs from Singapore, there are FIIs coming from the US, they come from Europe, they come from South Korea, Japan, Australia, and some of the other places. So each FII has got its own objective, I would say. Some come here for long term, they stay for 3 to 5 years. Some come here for 1 to 2 years. Some come here for less than 1 year. And you'll be surprised to know that a lot of FIIs also invest in futures and options. Well, when you talk of futures and options, we are talking from one monthly expiry to other monthly expiry, or maybe weekly expiry to weekly expiry. And some of them you'll be shocked to know, Varun, that some of them do daily trading also. They do day trading. So it depends on what is their objective, which country they are coming from, how liquid is their money, for how much time they want to park. So the answer is going to be very lengthy, but I have broadly laid out a picture before you, which will help you in knowing as to how it works. Yeah. Let's take our next caller. We are joined by N.R. Prasad from Bengaluru. Good evening, Mr. Prasad, and welcome to Market Mantra. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening, Mr. Sharad Kohli. Good evening, Mr. Prasad. We miss you every time you don't call. Yeah, Mr. Prasad, go ahead, put your question. Very good observation, Mr. Kohli. Because frankly, your answers have been vibrant, and this is the time to say that yes, from your tips I really made profit. I'm so glad to know that. And we'll have laddu together. Oh, sure. I think my laddu seem to have gone viral. I don't mind traveling to Delhi and have a party with you. Oh, my pleasure. Two questions, Mr. Kohli. The first question is, the trade deficit has gone beyond 24 billion in the March, in the month of August. It has. The imports also increasing. It has. It will have a very bad impact on our stock market in the coming days. My second question is, I am planning for a home loan. Yeah. So whether it is fixed or the floating, which will be the ideal to take the rate of interest? Okay, fine. Very nice questions, Mr. Prasad. You see, trade deficit, you are right. Our imports have been rising. Exports have, for the last 6-7 months, they have been dropping, the growth in exports. I think the reason is because, exports, Mr. Prasad, you would be knowing, are directly dependent on the global economic situation. And even though India is the fastest growing economy, large economy in the world, but that is not true for the world. India is growing at 7.8%. I am talking of the last quarter GDP numbers, whereas the world, the global economic growth, you would love to hear this, not in a very nicer way, this is only 2 to 3%. So India is far ahead of rest of the world. So therefore, some numbers sometime which are dependent on global economic growth ought to be depressed. Right. And high imports, Mr. Prasad, I see a positive in everything. High imports means that we are consuming a lot. In fact, we are making the other countries export boost. So therefore, I think this trade deficit is going to remain for some time because India is pushing hard its exports, and I'm sure as the global situation improves, you will see that this trade deficit narrowing. Fixed rate or floating rate, your second question. I think as of now, I would bet on floating rate because the inflation is gradually coming down, apart from the odd month here and there. So if you go for the floating rate, then in the times to come, the rates might come down. Whereas if you freeze right now at 8 or 9%, then once the rates go down, you will not be able to take the advantage. So my recommendation, Mr. Prasad, would be floating rate, so you're able to save something out of your EMIs. Yeah, Sharadji, I'm kind of tempted to link these two questions. Earlier, one of our callers spoke about rate cut, although worldwide. From the RBI's perspective, would you say that interest rates in India have kind of peaked out, and from here on, whenever it happens, it is a downward slide on? Well, if you take the current situation, Ranga, yes, they seem to have peaked out because the inflation is not in that range of 8%, 8.5%. It has come down, but because of the vegetable prices, the headline inflation was higher. But we, as economists, we look at core inflation. So the core inflation is still around 5.2, which is well within control. And as these monsoons settle down, the retreating monsoons, they go down, we will see that inflation will gradually come down. So I really don't see, unless there is some extraordinary
happening around the world which compels the Reserve Bank of India to take a decision. As they say in economics, ceteris paribus, which is if other things remain constant, I think the rates will not go up any further. In fact, we can look at rate cuts, the previous caller, in the months to come, not the month to come. Yeah. Okay, fine. Let's move on and take our next caller. We have Prakash joining us from Delhi. Good evening, Prakash. And what's it that you'd like to talk about? नमस्कार, मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार. बहुत बहुत नमस्कार. अपना प्रश्न पूछिए. कोहली जी को भी नमस्कार. नमस्कार प्रकाश जी. सर, मेरा गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन था. अभी आपने बताया, क्या वो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं, कभी भी उसमें निवेश कर सकते हैं? नहीं, सोना तो प्रकाश जी कभी कभी चमकता है, ये खैर ये तो मजाक की बात रही, पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की सीरीज आती है प्रकाश जी. आप नोट करेंगे तो जब भी ये आता है तो इसकी एक अनाउंसमेंट होती है. आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, कुछ मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में भी इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, बताया जाता है. नहीं, हमेशा आपके सवाल का मैं अगर सीधा सीधा जवाब दूं प्रकाश जी, तो हमेशा नहीं खुले रहते हैं, कुछ दिन के लिए खुलते हैं. और ये आपको ये भी बहुत सारे श्रोता जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरकार, देखिए, जब भी आप गोल्ड बॉन्ड लेते हैं उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि खाली डीमैट ये फॉर्म में है, ये कागज़ का टुकड़ा है या डीमैट है. इसके पीछे बाकायदा, जितना आप अगर आधा किलो ले रहे हैं तो आधा किलो गोल्ड होना चाहिए. तो जैसे जैसे गोल्ड की सप्लाई मॉनिटर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी हिसाब से गोल्ड बॉन्ड्स निकाले जाते हैं. तो हमेशा नहीं खुले रहते हैं. आप ताक में रहिए, जब भी खुलें, और जब आप निवेश करना चाहते करिए. बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो का 15-20% सोने में रखने में कोई बुराई नहीं है, जो आजकल की जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को देखते हुए. जी, Right, and before we take more phone calls, let's take a look at some of the other news item that we are tracking for you this evening. On the Wall Street yesterday, key indices ended sharply lower as plunging chip stocks and mixed economic data dampened investors' risk appetite. The Philadelphia SE Semiconductor Index slid 3% in the wake of a Reuters report that Taiwan's TSMC asked major suppliers to delay delivery of high-end chip-making equipment. So the Dow Jones Industrial Average slid 289 points or 0.8% to close at 34,618. The S&P 500 slipped 55 points to close at 4,450, and the Nasdaq Composite dropped 218 points to close at 13,708. Very quickly, let's take one more call. We have Arnav joining us from Delhi. Good evening and welcome to the show. गुड इवनिंग कोहली साहब. गुड इवनिंग अर्नब. Put your question quick. सर, ये सोवरकिन गोल्ड बॉन्ड जो है, ये क्या हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं? जी हाँ, आज तो मुझे लग रहा है सोने का दिन है रंगा. बिल्कुल गिफ्ट कर सकते हैं अरुणव, आप गिफ्ट करिए. और जिनको भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर वो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वो सुन के ही प्रसन्न हो जाएं कि उनके पास बहुत अच्छा गिफ्ट आने वाला है. बिल्कुल आप गिफ्ट कर सकते हैं. और अगर आपके वो रिश्तेदार हैं, मतलब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, चाचा चाची, मामा मामी, तो फिर वो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा. जी, Right, and let's take a look at the oil scenario. Global crude oil prices posted a third weekly gain last week as supplies tightened, spearheaded by Saudi Arabian production cuts combined with optimism around Chinese demand to lift crude. So the Brent crude futures ended the week at $93.93 per barrel. US crude futures closed the week at $90.77 per barrel. Both contracts gained about 4% each on a weekly basis. We have Keshav joining us from Delhi, but I'm afraid we have lost contact with Keshav. We'll try and take him in our next program. We are running towards the closure. But very quickly, Sharadji, a quick comment on oil scenario. Oil from, around $82, $81 has moved to, 93. How do you see the prices in the near future? In fact, Ranga, when it went down, I would, go a step further in what you said. From $70 odd, it has now gone up to 94. So I think it's not very good news for the countries like India who heavily depend on oil. 86% of our oil requirements are being, replenished from imports. So I think it's the OPEC countries, every time they see the prices softening, they take a decision to harden the prices. We hope, wish and pray that they come down soon. Well, that's it. We'll have to call it a day. Sharadji, thank you so much for joining us in the studios to answer all the questions, queries and doubts of our listeners. It's been an absolute pleasure. Thank you. And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal says India should target to increase the value of spices exports to $10 billion annually by 2030.
On Wall Street, the Dow slides 0.8% on mixed economic data, and Brent crude oil futures post the third consecutive weekly gain. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock markets. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani,